So we're starting off with this new topic, kinematics, second topic basically. Up till now, we've discussed all the measurement techniques, units, derivation of units, errors, uncertainties, addition, subtraction of uncertainties, and at the same time, we're also done with scalar and vector quantities, which is discussed briefly here what scalars and vectors are. Kinematics is all related to motion. When objects move, the physics related to the movement of objects is known as kinematics. So just सबसे पहले we look at the equations of motions. So equations of motion are basically certain formulas that we have, equations that we have to understand the motion of an object. सबसे पहले तो distance. It is basically distance traveled by an object is a scalar quantity and it describes the amount of area or the ground that object covers. So you move from one place to the other, you cover a certain amount of distance. And it is a scalar quantity. Scalar quantities, once again, just to recap, are all those quantities that have magnitude only and not the direction. Whereas vector quantities are all the quantities that have magnitude and direction. Okay, this was just an overview. Displacement, on the other hand, is the shortest distance traveled. It is the overall distance traveled and it includes direction. So you can understand it by maybe, for example, if this is point A and this is point B. So there are two ways. You start moving, you cover all of these areas, you cover all of this, the entire track, and then you end up at B. So this is sort of one distance that you're covering. The other choice that you have is to directly go from A to B. Now, once you move directly from A to B, this is known as displacement. The purple line indicates displacement, whereas the red path is distance. So this distance is basically the path that you cover. It is not the shortest. It is basically the all of the ground that you cover, and A to B directly jana is sort of the displacement. Okay, this is the shortest distance that you cover. And now there is a direction present. Direction ye hai, A se B jaane wali. You cannot move, you cannot go anywhere else. You just have to cover this entire path and you move from A to B directly. This is known as displacement. Okay. Now, is it clear till now? Yes. Okay. Speed and velocity, again, there's a general comparison between speed and velocity because speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. So speed is distance per unit time. So you divide the distance, it is the rate, you could say it is the rate of distance being covered, distance per unit time. And velocity is displacement per unit time. So because speed is a scalar quantity, you're going to use a scalar quantity in its formula as well, distance by time. And velocity, because it's a vector quantity, you're going to use a vector with it, which is displacement over time. All right. Now, acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. You divide velocity by time. Change of velocity hai कि a final velocity minus initial over time is acceleration. I'm assuming you already know these things. Yeah, very basic. Uniform acceleration is when the acceleration is constant. यानी देखो acceleration का होना itself indicates that the object speed is increasing. Why? Because acceleration का मतलब है you gradually there's an increase in speed. You accelerate, यानी आपकी speed किसी एक ratio पे increase कर रही है. Now, when acceleration is constant, this indicates that there is a change in speed. The speed is increasing at a constant rate. Okay? A constant acceleration doesn't mean constant speed or constant velocity. ये दो different चीजें होती हैं. You need to understand कि if acceleration is constant, इसका मतलब ये है कि speed एक constant rate के साथ increase कर रही है. क्योंकि acceleration is the rate of change of velocity. So your change of velocity will be constant, यानी change होगा, लेकिन वो constant change होगा. ठीक है? Now the acceleration time graphs.
अब if you look at these graphs over here, तो हम इनको we're going to start off with the first ones, the displacement time graphs. हम सबसे पहले इनसे understand करेंगे. So graphical representation of data is again sort of how you present your data. आप उसको एक ग्राफ की सूरत में represent कर रहे हो, ठीक है? तो this is so we use these different graphs: displacement per unit time, velocity per unit time, acceleration per unit time, to represent the changes in these physical quantities. So सबसे पहला graph is the displacement time, this green one, if you guys can see this on your screens. Displacement time, displacement is on the y-axis, time is on the x-axis. And if you see the gradient of this graph, which is an increasing constant slope, displacement over time क्या चीज होती है? Velocity होती है. Gradient का formula कोई बता सकता है? Guys, how do you calculate gradient? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Exactly. So basically you divide the change in y positions over the change in x position. So y by x ho sakta hai, simple. So if you look at the displacement, which is the y coordinate on this graph, and x is time, the y by x is displacement over time, which is velocity. So aapka gradient is graph ka is velocity. So if this line is constant, if this line is increasing, uniformly increasing, then can we say that velocity is constantly increasing? Because velocity is gradient. Guys, is this graph clear? Yes. Okay. Now, velocity over time graph. Velocity time graphs represent the change of velocity per unit time. और इस graph का जो gradient है is acceleration. क्योंकि if you look at this graph, देखिए, y over x, y is velocity, x is time. So y by x का gradient क्या बना? Velocity by time, which is acceleration. So अगर ये graph, if you see this purple line, if it's let's say increasing uniformly, positive, constant, तो आपकी acceleration uniformly increase कर रही होगी, ठीक है? इसी तरह से इस graph का area under the graph, area under it is displacement, because area क्या होगा triangle का? Half base into height. Base क्या है यहाँ पे? Velocity, time है, और velocity क्या है? Height है हमारे पास. तो area बन जाएगा displacement हमारी. Okay. Similarly, this is another form of the same graph. If you look at it, ये वाला, इसमें velocity by time ही है. Velocity का जो gradient है, it's increasing. Now, अगर इस तरह का gradient होता है ना, ये यूं, तो कोई भी curve upwards is an increasing gradient, where the gradient is non-uniformly increasing with an increasing rate. अगर acceleration यहाँ का gradient है and acceleration is increasing, it is non-uniform. It is non-uniformly increasing and it's increasing with an increasing rate. उसके increase होने का rate ज़्यादा है, ठीक है? एक तो acceleration खुद increase कर रही है, लेकिन साथ साथ उसका rate भी increase करता जा रहा है. Now, rate कैसे increase हो रहा है? Rate कैसे increase हो रहा है acceleration का? Sorry, एक velocity का. Velocity, देखो, सबसे पहली बात, velocity का rate तो acceleration itself है. Acceleration increase होने का मतलब यह है with an increasing rate. हम ये कह सकते हैं कि velocity per unit time बहुत तेजी से change हो रही है. यानी for instance आपकी एक टाइम पे velocity 10 थी, आपने टाइम 10 seconds लिया उस change को cover करने के लिए, आपका आंसर 1 आ गया. फिर ऐसा हुआ कि आपकी velocity का change 20 हो गया, यानी आपने वही distance बहुत तेजी में cover कर लिया, आपकी speed और बढ़ गई है. तो इसका मतलब है, और टाइम आपने क्या कहते हैं, आपका टाइम भी साथ साथ बढ़ता जाए, यानी सॉरी उतने ही टाइम में आपकी स्पीड तेज है तो हमने डिस्टेंस जल्दी कवर कर लिया, ठीक है? तो 20 बाय, अगर आप वही टाइम कांस्टेंट रख लो तो इन सेम रेशियो आपका आंसर एक्सेलरेशन का बढ़ जाएगा. एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, या तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या आपका टाइम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? या वो डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर हो रहा है, ये हो सकता है. तो फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर आप लेट्स से इफ यू स्टार्ट ड्राइविंग और आपके जो एक्सेलरेशन शुरू में है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप जहां पहुंचती हो वहां पे भी पहुंचते हैं तब भी आपकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहती है. तो नाउ दिस मींस दैट यू स्टार्टेड ऑफ at 10 and you are ending at 10 and throughout your journey your acceleration was 10. यानी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज जरूर कर रही थी, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन it was increasing at a constant rate.
यानी आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही रेट से आपकी स्पीड बार बार बढ़ रही है, यानी 5 फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर आप हर 5-5 मिनट बाद अपनी स्पीड बढ़ा रही हो. तो दिस इज व्हाट इट मींस दैट एक्सेलरेशन वाज यूनिफॉर्म, ऑल्दो यस द स्पीड वाज इंक्रीजिंग, लेकिन एट ए यूनिफॉर्म रेट, एट ए कांस्टेंट रेट. और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन भी साथ साथ बढ़ रही थी, वेलोसिटी तो बढ़ रही थी लेकिन एक्सेलरेशन भी फॉर एक टाइम में 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 थी. तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. You get it? Yes, समझ आ गई. All right, great. Now, if you look at this final graph, which is acceleration, velocity over time होता है acceleration, और इसमें you see gradient यही है हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म. इसमें दोनों ग्राफ्स ड्रॉन है, एक तो नॉन यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म, let's discuss this uniform gradient. Velocity per unit time, if this is uniform, इसका मतलब है acceleration is there but it's uniform. यानी ये जो ग्राफ है, ये जो अभी हमने दूसरा ये वाला velocity time graph पढ़ा है, तो this velocity time graph could be translated into this acceleration time graph, क्योंकि we just said कि uniform acceleration है इस purple graph की. तो uniform acceleration को कैसे represent करेंगे कि एक value है उस पे ग्राफ constant सीधा जा रहा है. तो this is what uniform acceleration is. And non-uniform acceleration क्या है कि acceleration is increasing, जो कि इस ग्राफ की translation है. So I'm just making these arrows. This graph can be translated into this blue line, और ये purple वाला can be translated into this red line. ये इनकी translation है. अगर आपसे कहा जाए कि ये जो uniform acceleration का graph है, sorry ये जो velocity time graph है जिसमें acceleration is uniform, draw an acceleration time graph for this one. तो आप ये वाला red line इस तरह की draw कर देंगे. अगर आपसे कहा जाए कि आपका ग्राफ ये वाला है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है ये इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्सेलरेशन का. अब हमने ग्रेडियंट को उठा के उसका भी ग्राफ बना दिया है, और इस ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ इज वेलोसिटी. ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी बच जाएगी. ऑलराइट guys, is it clear? Yes. So instantaneous velocity. So instantaneous velocity is the velocity of an object at a specific point. किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी ले लें तो वो instantaneous velocity होगी. Just hold on for a second. All right, so displacement time graph में आप किसी भी एक पॉइंट पे अगर velocity लेते हो तो वो velocity instantaneous velocity. You draw a tangent at that graph at a very specific point and then you calculate the gradient. ठीक है, for instance अगर ये है, इसमें तो खैर velocity constant जा रही है तो इसका gradient भी constant ही होगा, लेकिन कोई curve आ जाता है आपके पास. For instance, I'm drawing this graph over here. ये ग्राफ है. Now you see this is an increasing gradient. अब इस पे आपसे कहा जाता है कि इस पॉइंट पे बताएं जी कि वेलोसिटी क्या है. तो you're going to draw a tangent. इस पॉइंट पे you'll see कि y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, और y by x करके you'll get the gradient. ठीक है, so this is how you find instantaneous velocity. Acha, yes, this is a very important point. That distance and speed can be represented in distance time graphs and speed time graphs respectively. Note that unlike displacement and velocity, distance and speed will never be negative and as their scalar values. कभी भी distance time graph या speed time graph negative quadrant में नहीं जाएगा. This is sort of an indication. क्यों? क्योंकि scalar values हैं. हम negative sign को directionality को represent करने के लिए use करते हैं. Your negative sign represents an opposite direction. Yes, do you guys agree? Positive, negative, दो different directions को represent करते हैं. So because displacement and speed are scalar quantities, you cannot use negative and positive to represent anything. क्योंकि negative का मतलब है कि direction change हो गई. अब से if you look at this graph,
ये ग्राफ यहाँ से नेगेटिव में, खैर ये तो नेगेटिव में नहीं जा रहा है, जीरो यहाँ पर है। अच्छा, विल सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसमें ग्राफ्स नेगेटिव में जा रहे हो, तो वो किसी वेक्टर क्वांटिटी के ग्राफ होगा. You should just know this. Scalar quantities, they do not have any direction, so their graphs cannot go into the negative quadrant. Now, in order to derive the uniform acceleration equations, you must consider the following velocity time graph of a uniformly accelerating object. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेरिवेशन आ गई इक्वेशन की. वैसे आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं आनी, so just know the equation. We're just skipping this part. You guys can write down this equation. This is the first equation of motion, which is for displacement. S represents displacement. U and V are the initial and final velocities, and T is time. So U plus V by 2 times T का मतलब ये है कि you add the initial, the final velocity, you divide them by 2, and then you multiply the answer with T, the time. So this is displacement. Guys, you can write this equation down. Then the second equation is V is equal to U plus AT. Velocity, final hai V, U is the initial velocity, A is the acceleration, and T is the time. You guys can write this down. इसके बाद, this is the next equation, ut plus half at square. S is displacement, u is initial velocity, t is time, half a acceleration, t square time. ठीक है. अब ये तुमने बहुत सारे equations यहाँ देख ली हैं. इसकी final एक और equation आ रही है. You guys can write all of these down, okay? The last one is v square is equal to u square plus 2as. V again, final velocity, u, initial acceleration or displacement. This is the summary of all of these equations. Let me know once you've noted these equations down with their representations. U क्या represent कर रहा है, V क्या कर रहा है. In force से related questions तो आते हैं, लेकिन मुझे issue उसमें होता है कि confusion होती है कि कौन सा वाला formula use होगा. हाँ, exactly. ये हमने भी बल्कि देखना है. हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. We'll see कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है. ये I'll explain this to you guys. यही सबसे ट्रिकी पार्ट होता है इक्वेशंस को सेलेक्ट करना. अच्छा, now see. अच्छा, एक तो सबसे important चीज है, whenever you guys come across such questions जहाँ पे equations आपको यूज करनी है, always write down the quantities first. देखो जैसे यहाँ लिखा है. Let's read this example. इसमें इसको solve करने के सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी quantities को लिख लिया है. S लिख लिया है, U लिख लिया है, V, A, T सब कुछ अपने सामने note down कर लिया है. The stone is dropped from a bridge 50 meters above the water below. What will be its final velocity and how long does it fall? तो वो कह रहे हैं कि एक stone है जो कि drop हुआ है bridge से. Bridge की height है 50 meters. यानी नीचे water है. You see, अगर समझ ज्यादा क्वेश्चन आए तो you can draw diagrams as well. इस तरह से ये वाटर लेवल है और लेट्स से ये ब्रिज का लेवल है ऊपर. ब्रिज की जो हाइट है it is 50, okay, 50 meters, and a stone is dropped. Okay, sorry, I'm using this mouse to annotate, तो इसलिए थोड़ा सा हाइट नहीं आ रही. 50 meters from the above the water below. What will be its final velocity and how far and for how long does it fall? तो आपने you're asked to find its final velocity and time. तो हम अब क्या करेंगे, हम सब कुछ लिख लेंगे. डिस्प्लेसमेंट क्या है, 50 मीटर है. वी हैव रिटन इट डाउन. इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो. देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. एक्सेलरेशन इज 9. एक्सेलरेशन फ्री फॉल मोशन जो होता है ना, जो ऑब्जेक्ट्स फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं. गाइस डू रिमाइंड मी, आवर नेक्स्ट लेक्चर शुड बी ऑन फ्री फॉल and falling objects, क्योंकि we need to have a lecture on falling objects just to understand ये वाली चीज जहाँ कि हम 9.81 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे. For now just know कि acceleration of free fall objects is 9.81. इसकी details we're going to cover in the next lecture कि why it is 9.81. okay,
because it's gravity की value है तो इसलिए हम ले रहे हैं, लेकिन gravity क्यों ले रहे हैं, this is what we need to cover in the next lecture. For now, acceleration is 9.81 and time is again what you need to find. सब कुछ लिख लिया. अब pick up an equation. देखो कि कौन सी equation हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा सूट करती है इस क्वेश्चन को करने में. तो S भी है, U भी है, V भी है, A भी है, T भी है, और अगर हमने सबसे पहले V फाइंड करना हो, you have all of the equations written in front of you. Can you tell me any one of the equations that we can use? V square is equal to initial plus 2as. Exactly. Why? Because this is all that you have. एक unknown है, बाकी सब given है, तो हमने फौरन पता लग गया हमने ये equation pick करनी है. तो if we pick up this equation, तो हमें V मिल जाएगा इसके आंसर में. ये हमें समझ आ गई. अब जब हमें V मिल जाएगा तो टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? अब तो बहुत ऑप्शंस हैं. आई थिंक हर इक्वेशन वैलिड है इस पे तो, लेकिन फिर भी एफिशिएंट कौन सी रहेगी इस पे? V is equal to U plus AT. U plus AT, absolutely you can use this equation क्योंकि it's very straightforward. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, वो ये कि फर्ज करें आपकी वेलोसिटी की वैल्यू गलत आई है, वो तो हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं होगा कि हमारा आंसर सही है गलत है. तो इन दैट केस इफ यू गो फॉर दिस इक्वेशन, तो अगर अब ये इस केस में हो सकता है कि लेट्स से इफ यू हैव अ डाउट ऑन योर आंसर ऑफ वेलोसिटी, तो यू विल नेवर गो फॉर दिस इक्वेशन वेयर यू हैव टू यूज एन आंसर दैट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन अ क्वेश्चन एंड यू डाउट दैट आंसर. तो इन दैट सिनेरियो हाउ अबाउट दिस इक्वेशन ut plus half at square, इसमें सारी वो चीजें जो कि आपको गिवन है, कुछ अपनी कैलकुलेटेड चीज नहीं यूज करनी है इसके अंदर, है ना. तो ये दो बहुत वैलिड इक्वेशंस हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. लेकिन यस इफ यू आर श्योर अबाउट योर आंसर कि वेलोसिटी आपकी बिल्कुल सही निकली है फाइनल, तो फिर इस पहली इक्वेशन को पिकअप कर लें. लेकिन इफ यू आर नॉट श्योर तो गो फॉर द थर्ड इक्वेशन. ठीक है, ऑप्शंस हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, ये चूज करना होता है कि वाइजली कि कौन सा ऑप्शन पिक करें. तो यू सी सबसे पहले हमें वेलोसिटी आ गई, इन्होंने बल्कि हाफ at स्क्वायर वाली यूज की है, वेलोसिटी को नहीं यूज किया. आई थिंक दैट इज अ वाइजर चॉइस. कि पता लगे वेलोसिटी का आंसर गलत निकला है, उसको अगले पार्ट में भी यूज कर लिया, अगला आंसर भी खराब हो गया. ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ताकि आंसर्स खराब ना हो. पिछले ए लेवल्स में एरर कैरिड फॉरवर्ड तो होता नहीं है, अगर एक खराब है तो फिर यू वोंट गेट अ मार्क फॉर द नेक्स्ट वन एज वेल. ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? Yes. समझ आया कि किस तरह से वी आर पिकिंग अप इक्वेशंस? Yes, sir. ओके, दो आपको भी. Yes. Okay. Now let's be skipping this one. अच्छा, यहाँ पे तो हमारा खत्म ही हो गया सब कुछ. So what we can do now is let's try doing some questions. I'm gonna end the recording now because we're done with the lecture. We'll do some practice questions now of the basics of kinematic equations, just to see कि हम ये equations कहाँ use कर सकते हैं and how